अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से हों, जहाँ पर भी अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। जैसे आपको पता है कि एससीओ का जो समिट हुआ तेंजिन चाइना में, दैट वाज अदरवाइज कॉल्ड एज 25 तेंजिन एससीओ समिट, जो कि चाइना तेंजिन में हेल्ड हुआ। उसमें आपको पता है कि 25 हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया समिट में। इस समिट के बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर वो बच्चे हु आर intending to appear in the civil service exams. It's going to be an important video for them, as we are going to break the crux of the matter in this video within 5 or 6 minutes as to what this SCO summit basically meant for different allies, different countries, different, the global order is concerned. And how does this summit stand for the United States of America and its Western allies? So सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चाइना है, पिछले समिट्स में इन लोगों ने अपनी जो माइट है रोबोटिक्स में, फार्मा में, एरोस्पेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, डिजिटलाइजेशन में ऑलरेडी अपना लोहा मनवाया है. एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट चाइना इज टेकिंग ए लीड इन ऑल दोज एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, फार्मा, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिजिटलाइजेशन. तो अब जो इस वाले इवेंट में चाइना ने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ दिया है पूरी वर्ल्ड को, पूरे ग्लोबल को. एंड दैट्स द रीज़न वी आर सीइंग द हेड्स ऑफ 25 states, the mighty states. There is a complete tilt towards China, Russia and the other countries who are leading this bloc actually. तो ये 25th जो है ना समिट था, और उसमें बहुत सारे 25 हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो थे इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इस समिट में. अच्छा, दूसरी जो इसमें बड़ी बड़ी जो पावर्स थी, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, जिसमें चाइना ऑफ कोर्स वाज द वन विच होस्ट द समिट. इंडिया था, बेलारूस था, ईरान था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, पाकिस्तान था, रशिया था, ताजिकिस्तान था, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, नेपाल, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, एंड ऑल दीज mighty countries were in this summit. 1500 गेस्ट इस समिट के अंदर आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यूजिंग द एससीओ समिट एज ए विक्ट्री परेड. व्हाट डज दिस मीन? तो चाइना ने विक्ट्री डे परेड जो है उसी समिट के दौरान उसको यानी सेलिब्रेट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया लोगों के सामने, पूरी वर्ल्ड के सामने. एंड इसके अंदर जो है उन लोगों ने एक अपना विजन जो है विच इज़ अबाउट द वर्ल्ड, दैट व्हाट डज चाइना स्टैंड फॉर द वर्ल्ड एज सच, and why there has to be tilt of these all the heads of the states of China, because China has given a vision to the world. तो चाइना ने इसमें एक डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी पावर को, अपने विजन को, अपनी मिशन को. और उसके साथ साथ बहुत बड़ा इवेंट जो इसमें था वो था नरेंद्र मोदी विच द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी पार्टिसिपेशन इस समिट में. तो उनकी पार्टिसिपेशन से क्या मतलब निकाले हम लोग? So what we basically understood that China and India both are the global economies, the big economies. So there has been a tussle in the past, there has been differences, there has been the isolation, there has been the border conflicts as such. लेकिन अब लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से चाइना इंडिया जो है रीसेट करना चाहते हैं अपने, they want to repair the damages that has taken place in the past, and they want to repair the relationship, and they just want to really look for the opportunity in the future कि किस तरह दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने लोगों को सर्व कर सकते हैं. जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या रोबोटिक्स हो, या एरोस्पेस हो, या टेक्नोलॉजी हो, फार्मा हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, क्वांटम कंप्यूटर हो, इन सारी एरियाज़ में एक दूसरे से कैसे कोलैबोरेट किया जाए. व्हाट चाइना इज़ गोइंग टू ऑफर द इंडिया and what India can offer the China. So there is a complete overhauling of the relationship between the two countries, as we saw a summit between the Indian, Prime Minister participating in this event. There is something very big crux of the matter of this event is concerned. इसका दूसरा crux of the matter जो था वो था डोनाल्ड ट्रंप का 50% of the tariffs that he has imposed on the Indian economy. जिसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक काउंटर मेजर के तौर पे ये कहा था कि सिंस इंडिया इज इम्पोजिंग द टेरिफ्स विच आर वेरी मच हायर, नॉट अलाउइंग द अमेरिकन प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड एट द इंडियन मार्केट्स बेसिकली. तो उसने कहा कि काउंटर टेरिफ्स जो है मैं इनको इम्पोज करूँगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज इम्पोज 50% टेरिफ रेट ऑन द इंडियन प्रोडक्ट्स विच हैव हैड अ मैसिव बैकलैश, जिनकी वजह से इंडियन जो इकोनॉमी है वी रीड इट in the future as to how it
can adversely affect the Indians, the production as such. But at this point of time, what we are basically seeing that now the India is trying to search the new, what you call is markets or new countries where it can sell out their this all the products, all the exports basically of the Indian origin products are concerned. तो ये भी एक वेकअप कॉल थी डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, द इंडियन टिल्ट टूवर्ड्स द चाइना एंड रशिया ब्लॉक। ये एक बहुत बड़ा इसका क्रक्स ऑफ मैटर था। अच्छा, चाइना ने इसके अंदर एक और चीज़ जो किया वो था मिलिट्री माइट को डिमॉन्स्ट्रेट करना। चाइना ने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की, क्योंकि उसमें जो 3 बड़े बड़े लीडर्स थे, एक था शी जिनपिंग जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, द सेकंड वाज व्लादिमीर पुतिन, president of Russia, and there was also a leader Kim Jong from the North Korea। तो ये तीनों बैठे थे और जिसके अंदर उन्होंने शोकेस किया कि हम किस तरह अपनी जो है टेक्नोलॉजी से, अपने मिलिट्री माइट से पूरे वर्ल्ड को, वी आर वन ऑफ लीडर्स ऑफ द ग्लोबल लीडर्स एट द ग्लोबल लेवल। तो उसके अंदर उन्होंने शोकेस किया है एंटी शिप गाइडेड मिसाइल्स जो थे उनको शोकेस किया। उसके अंदर अंडर सी ड्रोन्स को शोकेस किया चाइना ने कि हाउ दे आर मच मोर एडवांस्ड इन द अंडर सी ड्रोन्स बेसिकली। दे ऑल्सो सी शोकेस द एयर डिफेंस सिस्टम विच इज़ एब्सोल्युटली द एयर डिफेंस लेजर्स जो है, और रोबोट डॉग्स को इन लोगों ने इम्पोज किया है। दे हैव बीन एबल टू मैन्युफैक्चर द रोबोटिक डॉग्स। तो उसका भी इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया इस समिट के अंदर। इस समिट के अंदर एक और बहुत इवेंट जो हुआ, दैट वाज द पुतिन, द व्लादिमीर पुतिन हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, बेसिकली इनवाइटिंग Vladimir Zelensky of the president of Ukraine to Moscow for carrying the meetings and obviously coming up with some reconciliation measures to put an end to the war that has been existing between the two countries from the last several years, where hundreds and thousands of people have died and the proper infrastructure, everything has been demolished across both the countries। तो ये भी एक बहुत ही क्रक्स ऑफ मैटर था इसके अंदर जो ये समिट हुआ। अब हम ये देखें कि एक टाइम पे लोग बातें कर रहे थे कि चाइना इज़ गोइंग टू बी द ग्लोबल पावर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट नाउ बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस state of the art technology, the military, the might, these drones, the robotics, the artificial intelligence, quantum computing, all these areas, the China is doing a tremendous, work, and they are showing a tremendous advancement. And it has become a serious challenge now for the United States, how they are going to counter now to China. Because China is, the countries and the heads of the states, the way they are tilting towards China has become a serious, serious challenge for the United States. जिसकी वजह से डोनाल्ड जे ट्रंप ने ये कहा कि चाइना, रशिया एंड किम जे ऑफ नॉर्थ कोरिया is basically conspiring against the United States. And he has been also threatening to them that if you're going to carry any kind of conspiracy against the United States, there are going to be the repercussions. So what basically we have seen in this summit was not an ordinary summit, but this was something extraordinary summit basically, because China is showing the world that how China could be the leading global power now in the new world order, और किस तरह जो है ना लोग उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कंट्री उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, whether it's a technology, it's the manpower, it's artificial intelligence, it's the aerospace, it's robotics, it's computing, quantum computing, it is electrical, aerospace, it's electrical vehicles. So many countries are now tilting towards China, as China is turning out to be a global power. In fact, it has become one of the global power, which is seriously challenging to the United States and its Western allies. अब इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरीज जो है ना वेस्टर्न जो थिंक टैंकर्स है उसको रीड कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट टुवर्ड्स दिस इमर्जिंग ब्लॉक which is led by China, Russia and North Korea, and many countries, and especially the India to tilting towards this bloc is something that's a serious challenge for the United States and its allies. We're going to see you next time. Assalamu alaikum.